present days, Karachi is the capital of the Sindh province of Pakistan. So it is having a coastline. Now at that point of time, Sindh was under the rule of Dahir. Continuously the trade which was coming to the Sindh port towards that side, so Sindh to Iran, और बहुत सी चीज़ें वो हमसे जो है लेके गए. For example, mathematics, astronomy and medicine. It was, the knowledge was Indian, but to the Western world it was introduced by Arabs. पृथ्वीराज चौहान को ये दिखा that he is बठिंडा तक आ गया है, then आगे का बेल्ट अम्बाला करते करते दिल्ली तक ये आ सकता है. So what he did, that he had a battle with this Muhammad Ghori, and that is very decisive battle, first decisive battle. Okay, so now we are going to start the part of medieval history, the medieval period. Medieval period basically refers to the time period roughly from 1200 to 1800 BC, but of course that is not an absolute calendar change, rather that is something which is the transformation to that, or the movement towards that period, started with the Arab and the Turkish invasion. So this peaked in the 8th century. Now what happened, that in the mid of 7th century, Islam was born in Arabia. Okay, and gradually, like any other rulers would have done at that point of time, the Islamic rulers also started expanding their empire. Fine. Now, by the time Prophet Muhammad was there was no dispute over the leadership, and after him, it was his closest companions who became the leaders of the Muslims. But then there was a conflict over the leadership, and ultimately it was decided that the Caliph is going to be the political and the religious leaders of Muslims throughout the world. So whatever is the decision passed by Caliph is considered as a decree, and it cannot be overruled. And every Caliph, of course, wanted, so it was more political, lesser religious in the later period. So every Caliph wanted that my empire or my area of jurisdiction should be larger than that of any other Caliph or my predecessors. So what they did, they started expanding the Islamic empire. So initially the Caliphs were Arabs, later on it was the Turkish. So that is why we call it as the Arab and the Turkish invasion, because initially the control of the Muslims was in the hands of Arabs, and later on it was shifted to Turkish, and it will remain with the Turkish for till the chair of Caliph was abandoned after the First World War. Ottoman Empire. So Ottomans will be, Ottoman Empire was there for almost 700 years, one of the longest ruling empire. We'll talk about that later. But the most significant Arab invasion that occurred in India, and that was in the 8th century by Muhammad bin Qasim. So the first one to invade the first one to invade was Muhammad bin Qasim in this region, and he invaded towards in the region of Sindh. So the predecessors of this, be it the Umayyad Caliphate or the other predecessors, they have expanded in Middle East, North Africa, parts of Europe and Central Asia. Is like the Pope in Christianity. No, he's not a priest. But when Pope was there, not today, Pope of the medieval times, in the ancient times, where he is the political and the religious leader. Caliph and Caliphate are two different terms. No.
Caliph is the position, caliphate is the system. Caliphate. It's the same thing, same thing. Fine. So, so the initial, and we have seen that the Arabs were already having trade relations with India. Arabs were already having trade relations with India, but it was in the year 711-12. Then that triggered this invasion by Muhammad bin Qasim. What was happening that the ruler of Sindh, now Sindh has a sea coast. Sindh has a coastline. Sindh is, present days, Karachi is the capital of the Sindh province of Pakistan. So it is having a coastline. Now at that point of time, Sindh was under the rule of Dahir. Continuously the trade which was coming through the Sindh port towards that side. So Sindh to Iran. Fine. It was all, under the attack of pirates. So Muhammad bin Qasim, who was, was a very confidante of Al-Hajjaj, who was governor of Iraq. Al-Hajjaj was the governor of Iraq who sent Muhammad bin Qasim to take care of Sindh because there was piracy. Governor of Iraq. So, in 700, there were two battles in this whole process. One is Battle of Dibal, 711. And 712, Battle of Rivar. There were two battles. 711, where Muhammad bin Qasim captured the port city of Dibal, which is modern day Karachi, and they got a control over Sindh. And ultimately, he advanced towards. So this Battle of Rivar was between King Dahir of Sindh and Muhammad bin Qasim, and Dahir was defeated and killed, and this marked the Arab conquest of Sindh. So Sindh is under Arab rule since 712. Sindh is under Arab rule since 712. Fine. And by 713, so by this they got control of Sindh. 713, they got control of Multan. They got control of Multan. So in this way, Sindh and Multan became the Arab territories, or became the part of the Caliphate. Fine. Okay. So Dahir was defeated, and gradually Sindh and Multan were captured, and Muhammad bin Qasim has referred Multan as the city of gold. Fine. Now what happened, that because now it became the part of the Arab Empire, it became the part of the Caliphate's empire. So what was required? It was required that they should have an administrative system out here. So what they did, they divided all the regions that they have captured into administrative unit called Iktas. What they did, they divided the whole province into number of districts, let's say, which were called as Iktas,
And what they did that they ensured that an Arab military officer is heading this Iqta. Iqta was like a district. Fine. Iqta was like a district. And they ensured that the subdivisions, means the subdivisions of this district are ruled by local Hindu officers. So they appointed local Hindu officers at the subdivisional level, but the in charge of this Iqta was a Arab military officer. Fine. Okay. Then what happened that there was a change in the caliphate. At the time when Muhammad bin Qasim came here, the caliph was Caliph Suleiman, but later on, he was succeeded by Caliph Walid. Now, Caliph Walid was someone who was an enemy of Al-Hajjaj. Caliph Walid, the new caliph, the new head, does not like the governor of Iraq, that is Al-Hajjaj, and Muhammad bin Qasim was son-in-law of Al-Hajjaj. Okay, Muhammad bin Qasim was, सर ध्यान कहीं और है, बहुत छोटी छोटी एपिसोड्स हैं, गायब हो जाओगे. ओके, जब लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा है तो ध्यान दिया है. हाँ, अभी बहुत सी कहानियां हैं. So what happened that there was a change in the caliphate. The new caliph Walid he didn't like Al-Hajjaj, who was the governor of Iraq, and because Muhammad bin Qasim was son-in-law of Al-Hajjaj, so Muhammad bin Qasim was dismissed. Al-Hajjaj was also dismissed. Muhammad bin Qasim was captured by caliphate's forces only, and then he was sent to Mesopotamia, where he was tortured to death. Qasim. जितना दूर must be some reasons. Fine. So Iraq, Mesopotamia is what? Modern day Iraq. तो वो उधर सीरिया लेबनान की तरफ उसे भेज के वहाँ he was tortured to death. Fine. But here what happened, that when they started this administration, now this whole region now became part of the Arab conquest. Sindh and Multan, and for next almost 1.5 century, 150 years, Sindh and Multan were the part of the Caliph's empire. For the next 150 years, Sindh and Multan were the part of Caliph's empire or the Arab's empire. अच्छा, यहाँ पे जब आए तो एक तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इक्तादारी की शुरुआत करी, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज इक्ता. सो दिस वर द मिलिट्री ऑफिसर्स, इट वाज काइंड ऑफ अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. दूसरी चीज इन्होंने जो करी, they imposed jizya. What is jizya? क्या बात कर? Yes. This was a mandatory tax imposed on non-Muslims. Yes. So यहाँ से जजिया की शुरुआत होती है. जजिया को जजिया is a villain, especially when the historiography is done by Indian historians. It is a villain. Now, there is a reason of imposing this tax. There was a reason of imposing this tax. और वो ये था कि एक तो यहाँ पे मुसलमान नहीं थे ज़्यादा. अच्छा, like Muslims have a concept of zakat. Zakat is 2.5% annual tax which Muslims pay. It's like nowadays, because we don't have a taxation system of theological taxation system तो है नहीं. So what we used to do, we used to give it in charity and other ways, but we have to calculate and we have to give 2.5% of our assets annually. Assets and savings. Like Christians used to pay 10%. We used to pay, but that 10th of the income. We pay 2.2. वो फ्रैक्शन में कह रहा हूँ, परसेंटेज में कह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, दैट इज कॉल्ड एज 10th.
उसको that is called as tenth in Christian theology. The name of that is tenth. जो हमने tithe या टीथे पढ़ा था, that is tenth. Fine, tithe in the ancient. Yes. So Christians used to pay 10%. We used to pay 2.5%. अच्छा, जब जिस टाइम खिलाफत का निज़ाम था या जहाँ जहाँ पे मुस्लिम रूल था, वहाँ वो 2.5% टैक्स जा रहा था, तो रेवेन्यू चल रहा था अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू. लेकिन जब वो यहाँ आए तो यहाँ तो कोई मुसलमान मिला नहीं ना. अभी तो यहाँ उतने मुस्लिम्स हैं नहीं, टैक्स किस पे लगाएं? मुस्लिम्स पे ही तो लगेगा. तो ज़कात तो नहीं लगाएंगे, बिकॉज ज़कात हैज़ अ मोर रिलीजियस importance, because that is one of the 5 pillars of Islam. Fine. So they're the 5 pillars, one of the 5 pillars of Islam. So वो उसके साथ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाने का theologians ने मना किया नहीं. Then they imposed a new tax which was jizya. Jizya was a tax which was imposed on non-Muslims. अच्छा, initially there was no ill will in imposing these taxes, because this was more of an administrative requirement at this stage. हाँ, later इसको as a mode of discrimination, इसको as a mode of exploitation use किया गया. लेकिन जिस पॉइंट पे आप लगा, तो अगर उसका रीजन देखोगे तो it was more administrative rather than religious. It will turn religious later on when you will see that तुगलक का दौर, फिरोज शाह तुगलक के दौर में इसको रीइंस्टेट किया जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिवली. अकबर के दौर में भी काफ़ी वक्त तक रहेगा. 1590s में अकबर, 1591 और 93 अकबर विल रिलीज अ डिक्री ऑफ, और 80s, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली. हाँ, 1580s में जो है अकबर एक ऑर्डर इशू करेगा और कहेगा कि अब जजिया जो है वो नहीं लगाया जाएगा. औरंगजेब इसे दोबारा लगा देगा. सो बाद में ये विलन ज़रूर बना, लेकिन इस स्टेज पे जब हम देखते हैं तो एक नई एक ऐसी आप कह सकते हैं एम्पायर में ऐसे कुछ प्रोविंसेस आए जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो टैक्स कहाँ से लगाते? सो व्हाट दे डिड वाज दे इम्पोज्ड जजिया. फाइन, क्लियर हुआ? जजिया को याद रखना है, बार बार आएगा. Okay, there are, I'm sorry, Shivangi, tax system, Ayushi. Akbar abolished jizya, yes. चाहिए आज घर से ही बैठ के देखना. Okay. So, if we talk about what are the consequences and impacts of Arab invasion? First of all, this region, which was largely unaware of Islam, Islam was introduced or in the Indian subcontinent through this, क्योंकि सिर्फ invasion नहीं होता, वो एक cultural एक तरीके से वो होता है. And no doubt when Islam was introduced, later on that is going to play a very significant role in determining the socio-cultural and political, fabric of this whole region. So पहली चीज़ हुई कि इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दिस. दूसरा, द कल्चरल एक्सचेंज. सो बहुत सी चीज़ें हमने उनसे सीखी और बहुत सी चीज़ें वो हमसे जो है लेके गए. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. इट वॉज द नॉलेज वॉज इंडियन, बट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अरब्स. तो जो मेडिसिन का नॉलेज है, जो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है किसने? अरब्स ने दुनिया को बताई. लेकिन वो ट्रांसमिशन हुआ कहाँ से? सो देयर वाज अ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, देयर वाज अ कल्चरल एक्सचेंज. देन बाद में यू विल सी दैट बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ट्रैवलर्स आएंगे जिनके अकाउंट, चाहे वो अलबरूनी हो, अलबरूनी इस दौर में थे, फिरदौसी हो, ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, दे स्टार्टेड, एंड इन देयर हिस्ट्री देयर इज मेंशन ऑफ दिस होल, not this region where we are today, but yes, the Sindh and the Multan region, उसका mention जो है यहाँ पर है. Fine. Okay. Note down. Just one paragraph. The impacts. ये legacy कह लो, impact कह लो, whatever you want to call, but what it led. The Arab invasion of Sindh
the Arab invasion of Sindh did not result in large scale Arabization Arabization or Islamization of the Indian subcontinent. The region remained primarily Hindu and Buddhist for several centuries. Sorry. The region remained primarily Hindu and Buddhist for several centuries. However, the conquest laid the groundwork for the Muslim invasions. For the Muslim invasions in future, including those by Turkish and Afghan dynasties. Which would lead to the establishment of Islamic rule. Yes, to the establishment of Islamic rule in large parts of northern India. Full stop. Sindh remained the part of Islamic world. Sindh remained a part of the Islamic world, and the Arab presence in the region facilitated the spread of Islamic culture, trade, and learning. The presence in the region facilitated the spread of Islamic trade, culture, and learning in the Indian Ocean region. Full stop. This laid the foundation. This laid the foundation for future Islamic empires. Like Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Like the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Turkish invasion in India. Okay, so what happened that as gradually the influence of Islam reached Central Asia, Fine. So when we talk about the Turks are originated in Central Asia, and there were various Turkic tribes. Turkic or Turkic.
दोनों नाम आते हैं. There were various Turkic or Turkic tribes, and by 10th century there were various tribes: Uzbek, Kazakh, Tajik, Kyrgyz. They were all tribes. Turkey is in itself Turkey, or Turkey is a Persian word which basically means the land of 40 tribes. So there were various tribes out here, or by the time we are talking means 10th century. 10th century तक आते आते इनमें से बहुत सारी tribes, because of the influence of Islam, they have embraced Islam. Fine. And we saw emergence of Islamic dynasties like that of Ghaznavids and Ghurids. By that of Ghaznavids and Ghurids. Now, this Turkish ruler, there was a religious zeal and there was economic motivation as well, and they always looked India as a very rich land. And of course, there were some who were living in the arid and the semi-arid region. So of course, when someone is living in that harsh condition, for them this land was like heaven. And control here means control to food. Simple सी चीज. Fine. So there were various phases of Turkish invasion. The first one was Mahmud of Ghazni. Mahmud of Ghazni, 971 to. So why he is known for this? Achha, at the same time, why they were attracted towards India? One was its wealth. Another thing, you see, by this time, the tripartite struggle was almost in its ending phase. But it had weakened what? It had weakened the local or the domestic or the native rulers. Palas, Pratiharas were not of that strength now that they could face. And that is why, if you see that between 1000 to 1027 AD, Mahmud Ghazni invaded 17 times. How much? 17 times. And what he targeted? The industrial. No, he targeted temples. What he targeted? He targeted temples and major trade cities of northern India. And his primary motivation was to acquire wealth and plunder. Simple. Why temples? Because temples means temple. आपने आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा कि ये वाला पीरियड है, यहाँ पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग ऑन इन लाइक फुल स्विंग. और हर किसी को ये लगता था कि जिस राजा के टाइम पे जितना भव्य मंदिर बनेगा उस राजा का उतना स्टेटस होगा. तो वो अपने मंदिरों को और ज़्यादा, मतलब इट वाज ऑल, मतलब सारा जो है वो सोने जवारात, और मतलब इट वाज ऑल वेरी बिग काइंड ऑफ शो. सो टेम्पल वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेटस फॉर अ किंग. इसीलिए टेम्पल्स पे अटैक हुआ. जब भी आपको टेम्पल पे अटैक वाज लेस रिलीजियस, मोर यू कैन से इट वाज फॉर प्लंडरिंग एंड वेल्थ. फाइन. द मोस्ट फेमस रेड दैट ही डिड was 1025 Somnath temple in Gujarat. Fine. Achha, he had no plan to stay here. Then also, if you will see that for a very brief period of time, he annexed Punjab. So Punjab was under their rule, but for a very short period of time. And this raid on Somnath in 1025, it has always been seen as a point of clash and point of, you must have heard it numerous times even today. Somnath ka mandir loota to. He was coming from a region
he never saw ocean. So he asked someone, where is ocean? वो बताया कि वो वहाँ मिलेगा. So that was the shortest sea coast available. Gujarat, nearest sea coast was Gujarat from this part. He went there and he saw this, okay. But he was, no doubt. Mahmud of Ghazni returned with enormous wealth. Mahmud of Ghazni returned with enormous wealth after defeating Jaipal, the ruler of Hindu Shahi dynasty. After defeating Jaipal, the ruler of Hindu Shahi dynasty. Fateh Dawood of Multan. Anandpal of Nagarkot. Anandpal of Nagarkot. The Chandela rulers, and the rulers of Mathura, Kannauj, and Gwalior, and the rulers of Mathura, Kannauj, and Gwalior. Full stop. Mahmud's raids had far-reaching consequences. Mahmud's raids had far-reaching consequences for the Indian subcontinent. His campaigns exposed the vulnerability His campaigns exposed the vulnerability of the Indian kingdoms and demonstrated the wealth of the region. And demonstrated the wealth of the region. And demonstrated the wealth of the region to future invaders. So here, Ghazni had no intent of establishing a permanent rule here. But then what happened, that the domination of that region, the Ghaznavid region, was now, or the dominant power or the dominant dynasty in that region was now the Ghurid dynasty, means the people who belong to the region of Ghur. So Ghur is a Turkish-Afghani belt. So from there, of course, महमूद गजनी ने रास्ता तो बता ही दिया था कि कहाँ से आना और पैसा निकालना है, तो वो जो है उसने किया. So the second phase of this Turkish invasion was Muhammad of Ghur, or what you commonly call as Muhammad Ghori. But it is Muhammad of Ghur, 1149 to 1206. So he started his campaign in the late 12th century. 1175 he captured Multan.
and 1186 that part of Punjab which was under the Ghaznavid rule. 1186 he got control of that part of Punjab which was under the Ghaznavid rule or the Ghaznavid territories of ठीक है. Then 1189 he reached up to Bhatinda. 1189 he reached up to Bhatinda and captured the fort of Bhatinda. Acha, by this time, if you remember, the Chauhans have established themselves in Delhi, uprooting the Tomurs. The Chauhans have made the Delhi as their capital. So, what happened कि अब इस पृथ्वीराज चौहान को ये दिखा दैट ही इज भटिंडा तक आ गया है, देन आगे का बेल्ट अंबाला करते करते दिल्ली तक ये आ सकता है. सो व्हाट ही डिड दैट he had a battle with this Muhammad Ghori, and that is very decisive battle. First decisive battle, 1191. First battle of Tarai. 1191, first battle of Tarai, in which Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan. In which Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan. अच्छा, हुआ क्या? He got the Bhatinda region back. He got the fort of Bhatinda back. But he knew that others will come. He will come back. He will counter. He knew this very well. So he asked the other Rajput chieftains and military commanders to come together because you may face an attack. And this happened in 1192. Second Battle of Tarai. 1192, Second Battle of Tarai. अच्छा, मज़े की चीज़ ये रही, यहाँ दो तीन बात समझने वाली है. एक तो वो मूवी आई थी, हाँ, निहायत बकवास, उसमें हिस्ट्री का एच भी नहीं. पृथ्वीराज और समथिंग, पृथ्वीराज चौहान या समथिंग, इसी नाम से आई थी. फाइन, उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा, उसकी हिस्ट्री बिल्कुल वाहियात है जितना मैंने सुना. कि अगर उस फिल्म मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है और अगर वो सच है कि उसमें जैसा बताया गया तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा, हुआ क्या यहाँ पर कि पृथ्वीराज चौहान ने पहली बैटल जीती और उसके बाद ही आस्क्ड अदर राजपूत्स कि भाई देखो ये वापस आएगा. इसने सारे राजपूतों का इकट्ठा भी किया और he told all of them कि ये वापस अटैक करेगा और मोहम्मद गौरी ने किया. मज़े की चीज़ ये रही कि उस अटैक में, सेकेंड बैटल ऑफ तराई में, वहाँ सारे राजपूत थे, एक ही बंदा नहीं था, दो लोग नहीं थे, एक पृथ्वीराज चौहान और एक उसका सेनापति. Because he was busy, he was concerned about a swayamvar which was going out in Kannauj. So Prithviraj was more interested in संयोगिता, जिसका स्वयंवर होना था, तो वो वहाँ बिजी था और ये यहाँ पर अटैक कर दिया और बैटल. इन दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड गजनी. सी, गजनी वॉज इन्वेडर और गजनी वॉज समवन he was a plunderer. There is no doubt in this. Now, very unique incident happened with me personally. अच्छा, हुआ क्या, when आज से कोविड के टाइम्स की बात है. कोविड के टाइम आई थिंक 4-5 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात है, इन्हीं दिनों की होगी. अच्छा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई वाइफ वॉज विजिटिंग हर मदर्स प्लेस. ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सी आई एम गोइंग, और मेरा शेड्यूल मोर और लेस सिमिलर था, दैट आई यूज्ड टू लीव बाय 11-11:30 and I used to come back at night. पूरा दिन घर बंद करके जो भी होता था. अच्छा, शी वॉज रेगुलरली रिमाइंडिंग मी कि बालकनीज लॉक करके जाना, बंदर आ रहे हैं सोसाइटी में.
ठीक है. Daily I used to. What happened that at our flat there is this balcony which is not having that opening close. ऐसा वाला door नहीं, slider है. अच्छा, one day what happened? अच्छा, I was following these instructions daily. Then what happened? One day, अच्छा, I used to go late कि घर पे तो कोई होता नहीं था. तो यहाँ एक क्लास ली, फिर कहीं किसी का चाय पी ली, करते कराते आराम से घर जाते थे. वन डे आई रीच एंड मैंने घर खोल के जैसे ही मैंने ताला खोला, पूरा घर बिखरा हुआ. जैसे फर्स्ट चीज़ हिट करी कि चोरी हो गई. इमीडिएटली लुक टुवर्ड सेफ, बस ऑल फाइन. वो दरवाजे खुले भी नहीं. फिर मैंने थोड़ा सा जब व्हेन यू गेट योर सेंसेस बैक, यहाँ से देखा कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें फैली हुई हैं. मेरे बच्चे का एक इतना बड़ा वो डायनासोर था, वो पंचिंग वाला, वो ख़त्म हो गया. Monkey must have scared by it. So I realized this is a monkey attack. खैर कोई नहीं. अच्छा, tell me, despite the fact that I was being warned almost daily, अच्छा, और हुआ क्या? दरवाज़ा खुला नहीं था. I just स्लाइड कर दिया, लॉक नहीं किया. मुझे पता वो ओपन नहीं था, वो मैंने सिर्फ स्लाइड कर दिया था, उसे लॉक नहीं किया था. उन्होंने खोला, फ्रिज तबाह किया, किचन तबाह किया, चले गए. सारी खाने की चीज़ें फैली हुई थी. So my house was invaded. अच्छा, is this a forgivable offense from my end? To a larger extent, yes. Although it was not. लेकिन to a larger extent कि ठीक है, चलो हो सकता है. This is a matter of chance. Assume, although that happened it only one time in my life. दूसरी बार भी होता तो क्या होता? तो गलती माफ की जा सकती थी. तीसरी बार फिर होता तो, और 17 बार होता तो गलती किसकी थी? बंदर की या जो घर की रखवाली कर रहा था उसकी? क्योंकि वो तो बंदर का नेचर है ना. वो तो आएगा, वो तो खाने पीने की चीजें लेके जाएगा. इन्वेडर का नेचर है, वो तो लूटने आएगा. घर बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सो इफ महमूद गजनी invaded for 17 times and exposed the vulnerability, exposed that how huge wealth here is kept unguarded, it is not his fault because invasion and plunder is his nature. It exposes the weakness of Indian rulers, native Indian rulers of that point of time. एक बार होता तो समझ में आता, सर अटैक हो गया, चलो. 17 times. You did nothing. So he was here to plunder. He was here to plunder. On the contrary, Gauri had a different plan. He was there to stay. उसने बोला अब हम इसको परमानेंट अपने कंट्रोल में लेंगे और ये रीजन हमारा ही बन के रहेगा. आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराई, द टर्किश रूल indirectly started in India. After the second battle of Tarai, where मोहम्मद गौरी डिफीट. अच्छा, उसके बाद ये राजपूत फोर्सेस को हराने के बाद ना, उसने उसमें पता नहीं क्या दिखा दिया कि मोहम्मद गौरी ने को जो है पृथ्वीराज ने मार दिया. इन ऑल मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैंने ऐसा सुना. हाँ, मारा वारा कुछ नहीं था, क्योंकि मोहम्मद गौरी डाइड इन 1206, पृथ्वीराज डाइड इन 1193. पॉसिबल नहीं है वो जो दिखाया गया. हाँ, उसने पृथ्वीराज रासों में आता है कि अंधा कर दिया था, या ही अटैक्ड हिज आई और समथिंग लाइक दिस, बट देयर इज नो, मतलब उस दौर के जो हिस्टोरिकल वैसे हैं उसमें सच मेंशन नहीं आता. खैर, अच्छा, सतीश चंद्रा की जो मिडिवल इंडिया की किताब है, अच्छा नहीं आया हर्षित, गायब है, क्या हो गया? अच्छा, अभी छुट्टी शुरू कर दी. समर्थ भी नहीं है, कहाँ गया? He was... उसने बोला भी नहीं. कैसे दोस्त हो यार? एग्जैक्टली पूछना चाहिए था ना कोई बीमार. देन हु केयर्स? नहीं, इसके बाद शायद उसने घर जाने की बात. ओके, पॉसिबल कि लॉन्ग वीकेंड है तो. सो व्हेन यू रीड, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल में देखोगे तो वैसे भी मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा की जो किताब है उसमें there is, no, he's an authority. That person I'm referring to is an authority. What happened that and I'm referring that book, Medieval India Part 1, Satish Chandra.
वहाँ पे लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान एक्सेप्टेड द सुपीरियरिटी और सुजरानिटी ऑफ मोहम्मद गौरी, और इवन ही इशूड कॉइन्स ऑन हिज नेम, क्योंकि ऐसे कॉइन्स उस दौर के मिलते हैं जिस पे मेंशन है श्री मोहम्मद बिन साम। साम वॉज हिज फादर, सो मोहम्मद सन ऑफ साम, तो ये वाला कॉइन्स मिलते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने बाद में बगावत की, वेयर ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। सो 1192 में ये होता है, और 1193 से लेके 1198 तक इस दौरान दिल्ली और उसके आसपास के जो राजपूत इलाके थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अपराइजिंग्स होती हैं, बट ऑल द अपराइजिंग्स वर क्रश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सारे जितनी अपराइजिंग्स थी, एंड ग्रेजुअली मोहम्मद गौरी ने क्या किया, दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। फाइन, इस दौरान एक ऐसा इवेंट हुआ विच इज़ अ शेम ऑन ह्यूमैनिटी, ऑल्दो देयर वर मेनी, बट दिस वन इज़ अ शेम ऑन ह्यूमैनिटी, बिकॉज अभी हमने उसमें लिखा था राठौर्स ऑफ कन्नौज में बैटल ऑफ चांदवार 1194, राजा जयचंद वॉज डिफीटेड बाय दिस मोहम्मद गौरी। सो मतलब they were crushing all the mutinies and uprisings that were not mutinies but the uprisings that were against them. Then what happened that in 1202, so ये कैप्चर करने के बाद 1201-1202 में he ordered बख्तियार खिलजी to move towards बिहार एंड बंगाल। तो ये ऊपर मतलब राजस्थान और यूपी वाला बेल्ट कन्नौज तक कंट्रोल में आ गया, अब कहाँ जाना है, बिहार और बंगाल की तरफ। What this person did, बख्तियार खिलजी, that in 1203 नालंदा 1202 नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ 1203 सॉरी 1203 विक्रमशिला and 1203 Nalanda. Name was बख्तियार खिलजी। फाइन, इस बंदे ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया। ही डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज ऑफ विक्रमशिला एंड नालंदा in 1202 and 1203 respectively. And why I say that this is क्योंकि मतलब you imagine what a great loss to history this was कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की सारी किताबों को पहले बाहर निकाला गया और फिर उसमें आग लगा दी गई, and that fire burned for 6 months. 6 months. Imagine क्या ख़त्म हुआ होगा। बुक्स आर द मोस्ट प्रेशियस। सब तुम्हारा डिजिटल सब किसी दिन बूम हो जाएगा तो ख़त्म है, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बचेगा, कोई डिजिटल कॉपी नहीं बचेगी। एट द एंड क्या बचेगा, सिर्फ जो हार्ड कॉपी बची है ना, दैट इज़ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। एंड वी ऑलवेज गिव हाई रिगार्ड्स टू द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। उसको हमेशा एक अब सोचो उसने क्यों जलाया, सवाल ये है कि जलाया तो जलाया क्यों। नो, हाँ वन थिंग, सब्जेक्ट्स को एजुकेट करेंगे तो वो और ज़्यादा अपराइजिंग करेंगे। यस, दुनिया में कहीं पर भी अनार्किज्म आएगा, दुनिया में कहीं भी डिक्टेटरशिप, अनार्किज्म या इस तरीके का रूल आएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को ख़त्म कर देगा। अगर ख़त्म करना उसके बस में नहीं होगा तो वो उन्हें कंट्रोल कर लेगा, ईदर बाय सेंडिंग हिज ओन पीपल लाइक व्हाट हिटलर डिड। हिटलर डिडंट डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज, बट हिटलर डिड व्हाट, he controlled it by sending his people as vice chancellors or whatever, the heads and the deans, and by changing the curriculum. So either you will do this, or if we talk at that point of time, of course they were not educated, literate people that they would have sustained this, but they at least know the importance of education, क्योंकि जहाँ education होगा वहाँ सवाल उठेगा।
वो सवाल करेगा और वो सवाल क्रांति लेके आता है. इट इज क्वेश्चनिंग विच ब्रिंग रेवोल्यूशन इन अ सोसाइटी. क्वेश्चनिंग. रेनेसां क्या था? द एज ऑफ क्वेश्चनिंग. और क्वेश्चनिंग आप कभी भी ऐसे तबके से इमेजिन या एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो पढ़ा लिखा नहीं. बहुत कम ऐसी जगह हुए हैं. आप खुद इंडियन, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या देखा? जब तक एजुकेटेड नहीं थे तब तक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं आया. आया क्या? नहीं आया. जब एजुकेट हो गए, वेस्टर्न एजुकेशन का जो है इम्पैक्ट दिखने लगा, तब हमने देखा कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इंडिया में आता है. और आप कहीं भी देख लो दुनिया भर में, मार्क्स का रेवोल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, उसमें फिलोसोफर्स का रोल था, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, उसमें फिलोसोफर्स का रोल था. आप किसी भी मूवमेंट को, किसी भी उसको देखोगे तो इट इज ऑलवेज द एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास ऑफ अ कंट्री विच हैज रेज्ड द वॉइसेस. तो एनार्किस्ट रूल का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एजुकेटेड क्लास को या तो चुप करा दिया जाए या अपनी तरफ कर लिया जाए बाय जनरेटिंग वेरियस what not and what wrong narratives. इसने भी यही किया क्योंकि इसको पता था कि मेरे रूल के अगेंस्ट क्या हो सकता है, या जहाँ जो हम रूल करने वाले हैं, जो हम एनार्किज्म चलाने वाले हैं, उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है. उसके अगेंस्ट अपराइजिंग, और अपराइजिंग कहाँ से होगी? फाइन, क्लियर हुआ? दैट इज नो डाउट यार. मतलब देयर वाज अ वेरी like there are certain articles which leave a lifelong impact on you, and I read an article in the Hindu in 2013, 11 years back, और उसमें इसका जिक्र था. and then there was a Chinese story, maybe a folk tale possibly, कि the king of China, he identified 1,000 scholars of all ages, and they were sent on a world expedition to learn and to gain knowledge and to get अच्छा, अब ये लोग जो हैं सारे दुनिया भर में घूमे, जो भी स्कॉलर्स थे वो दुनिया भर में घूमे, उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर इकट्ठा किया, सब कुछ किया, और फिर वो लौट रहे थे. बाय दैट टाइम इट इज टेल ऑफ एंशिएंट टाइम्स, एंड बाय दैट टाइम देयर वाज, जब वो पहुंचने ही वाले थे, मतलब दे वर लाइक हार्डली 2 or 3 days of journey was left, there was the ship got stuck in a storm. तो कैप्टन ने आके बोला कि हमारे पास वज़न ज़्यादा है, बिकॉज किताबों का वज़न हम इनिशियली काउंट नहीं किया था. वी हैव 2 choices. वी हैव टू थ्रो द बुक्स. हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? किताबों को फेंक देना पड़ेगा. तो जो एल्डरली स्कॉलर्स थे उसमें से, वो आए, बोले कोई ज़रूरत नहीं, टेक दिस बुक्स सेफली आउट ऑफ हियर. बोले वज़न? बोले वी विल जंप. कि ये किताबें हमारे जैसे हज़ारों स्कॉलर्स बना देंगे, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों स्कॉलर मिलकर ये नॉलेज गेन दोबारा नहीं कर पाएंगे. इन किताबों एंड द टेल इज़ लाइक दे एक्चुअली जंप्ड. सो मैनी ऑफ द एल्डरली स्कॉलर्स बोले तुम यंग पीपल्स जो थे उनको जिम्मेदारी देके, जो बूढ़े थे, बोले हमारा काम हो गया. सो देयर वर 2 different part of the same opposite part of the same एस्पेक्ट कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है. एक ने कहा लाइब्रेरी ख़त्म कर दी, और एक ने कहा अपनी जानें जो है गवा दी, लेकिन किताबें बचा ली, ये प्रेशियस है. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ. आप एजुकेटेड होके, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, लिटरेसी की बात नहीं हो रही, टॉकिंग अबाउट एजुकेशन. So this 25th March 1206, Muhammad Ghori was assassinated in the Jhelum region. Yes, somewhere in Jhelum, in Central Asian region. Not Jhelum, Central Asian region. 25th March 1206. Okay.
And this, after this, acha, there was, before we move on to Delhi Sultanate, अच्छा एक पैराग्राफ लिख लो, एक पैराग्राफ लिख लो. The Turkish invasion fundamentally altered the political, social, and cultural landscape of India. The political, social, and cultural landscape of India. The establishment of Delhi Sultanate laid the groundwork for the rise of Mughal Empire. In the 16th century, which would go on to rule much of India, for several centuries. The Turkish invaders also contributed to the composite culture of India. The Turkish invaders also contributed to the composite culture of India, blending Islamic and Indian traditions. Composite culture by blending Islamic and Indian traditions. Islamic and Turkish. Indian tradition. Islamic and Indian tradition. Islamic and Indian traditions that continue to influence the region, this region even to this day. Now understand. After this, as soon as अच्छा क्या हुआ, वो सेंट्रल एशिया गया क्यों, सवाल ये था. Somewhere around the beginning of 13th century, इसको लगा यार that ठीक है, दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो he decided कि I have to go back. So what he did, he had a very confident general. कुतुबुद्दीन ऐबक, who, हाँ, इसका जनरल था, मिलिट्री जनरल था, रादर इसका स्लेव था. बस कुतुबुद्दीन ऐबक. और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो जितना उसने इंडिया में जो भी उसके पोजेशंस थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो भी इंडिया में पोजेशंस थे, उन सारों को, इंडिया में जो भी उसके पोजेशन थे, उन सब को कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका इंचार्ज बनाता है और वो यहाँ से चला जाता है. अच्छा, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्लेव
master relationship. Slave master relationship क्या होता था? There was a concept of slavery. किसी को कोई slave उसने खरीदा. अच्छा, the concept of slavery was like that कि slavery was not something which was hereditary by default. किसी बादशाह ने एक slave को खरीदा, वो उसका गुलाम है, ठीक है. वो उसका गुलाम कब तक है? जब तक कि वो जिंदा है. वो बादशाह का गुलाम है क्योंकि बादशाह ने उसे खरीदा था. जरूरी नहीं है कि बादशाह के बाद ऑटोमेटिकली वो उसके बेटे, अच्छा वो खुद अगर सर्विस देना चाहे तो वो दे सकता था, लेकिन इट वॉज नॉट मैंडेटरी दैट ही विल रिमेन अ स्लेव. सो विद द डेथ ऑफ मास्टर स्लेवरी एंडेड्स. द कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी वॉज लाइक विद द डेथ ऑफ मास्टर द स्लेवरी एंडेड. तो स्लेवरी हेरिडिटरी नहीं थी और स्लेवरी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज. उससे कोई और स्लेव क्लेम नहीं कर सकता था क्योंकि जिसने उसको खरीदा वो यहाँ से, वो दुनिया से जा चुका है, तो अब उसकी स्लेवरी भी जो है वो ख़त्म हो गई है. इसीलिए जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चलता है कि माई मास्टर इज नो मोर, ही इज नाउ फ्री फ्रॉम दैट स्लेवरी बॉन्डेज एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड लेड the foundation of Delhi Sultanate. (1206 to 1526). एक और रीज़न ये भी था कि मोहम्मद गौरी का कोई डायरेक्ट आयर जो है वो नहीं था. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस दिल्ली सल्तनत, 5 डायनेस्टीज रूल्ड इट. नंबर 1, स्लेव और मामलुक डायनेस्टी 1206 to 1290. 1206 to 1290. Fine. Then the Khilji or the Khalji dynasty. What I'll do is clear this all. I am giving you a flow chart. I am giving you the rough structure. और ये टेक्नोलॉजी इस क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन है और कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हर बैच को पढ़ाता हूँ. अगर आप इसको डिटेलिंग में, आई एम गिविंग यू द स्ट्रक्चर लाइक आई गिव यू इन मेडिवल, आई गिव यू इन मॉडर्न में दिए थे ना 2-3 फ्लो चार्ट्स दिए थे, वैसे ही आई एम गिविंग यू 1 मोर फ्लो चार्ट. और अगर आपने उसको ठीक से कर लिया, 2 पेज में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का दी एंड हो जाएगा. Sir, please. Let's say लेकिन ये आपको काम आधा मैं करूंगा, बाकी आपको करना है, मेरा काम नहीं है. मैं उसके बाद सिर्फ पढ़ाऊंगा. So Delhi Sultanate had how many dynasties? There were 5 dynasties which ruled Delhi Sultanate. First was the slave or Mamluk dynasty, which ruled from 1206 to 1290. Main rulers कुतुबुद्दीन ऐबक, एक्सपैंड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं. कुतुबुद्दीन ऐबक, फाइन. Then Qutbuddin Aibak 1206 to 1210. Then Iltutmish 1211 to 36. Then
Razia 1236 to 40, and then Balban was there from 1266 to Razia is a female. yeah, she is the only female ruler. Balban or Muhammad Firoz 266 to 87. Yes. ठीक है, अभी रफ स्ट्रक्चर बनाना, फेयर अपना बाद में करना. Then the next is Khalji or Khilji dynasty, that is from 1290 to 1320. यहाँ आपको दो ही रूलर्स के बारे में बात करनी है. In this Khalji dynasty 1290, the first one is Jalaluddin Khilji, and the next is Alauddin Khilji. ठीक है. Then Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty ruled from 1320 to 1430. Founded by Ghayasuddin Tughlaq. Then you have to talk about Muhammad bin Tughlaq, and then फिरोज शाह तुगलक. ठीक है. तुगलक के बाद आएगी सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1413 टू 1451. 1450. फाइन. यहाँ आपको एक आध दो नाम ही याद रखना है. एक नाम आता है खिज़र खान का, एंड खिज़र खान was the founder. Okay. Then was it na Khizr Khan was the founder. Then last Lodi dynasty, 1451 to 1526. यहाँ founder कौन? बहलोल लोदी. Then सैयद के नीचे आपने 144 लिखा है. 144 नहीं 14. अच्छा. And the last Ibrahim Lodi. ये वगैरह जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिख लेना. ठीक है. Now try to make this on a big scale. First you draw this, then I'll tell you what to do. हाँ sure.
How you define medieval history of India? It is a transition phase between ancient, where there were various records available, to modern, where there are almost every record available. Yeah, almost every record is available. What do you want? Even the royal decrees are available. But in medieval history, only royal decrees are there. But the story of a common man is missing. It is there. You are not reading it in GS because that is not relevant, but when you talk about history, it is there. Medieval history of India is a journey of struggle of power between the nobility and the kings, which starts from the Battle of Tarai, goes via Panipat, and ends at Plassey. I heard this. I have said this. This is my interpretation. I have read it on YouTube. It's in a clip. Can you also give us the period when India lost its sovereignty? No, it is yet to come. Why you forget the Mughal contribution to art, literature? Today, In terms of wealth. it is. Mughals had enormous wealth. Delhi Sultanate had enormous wealth. Kohinoor was here. अब तो वो वेल्थ इतनी होगी कि अगले 500 साल कहानी चलेगी, लूट के ले जाएंगे. We are somewhere, let's say कि from 1200 to 1757, next 500 years will be like we will be the richest. We will be controlling 1/4 of the world trade. 25% of the world GDP will fall in India. This was the strength. When you talk about Mughal Mansabdars, they were the highest paid civil servants in the world. So basically it is a journey which starts from Tarai. So Tarai 1, Tarai 2 goes via Panipat. Panipat 1 laid the foundation of Mughal Empire and ended Delhi Sultanate. Panipat 2 consolidated the Mughal Empire and ends at Plassey. Battle of Plassey 1757, because that marks the beginning of the British rule in India. And this whole period of almost 500 years, 550 years, is nothing but a struggle of power between the nobility, that is the bureaucracy or aristocracy as you call it, and the royalty. So the royal people. It's nothing but just a struggle between them. At points when rulers will be strong, nobility will be suppressed. As soon as nobility will see that the ruler has become strong, they will take over the charge. Then they will establish their own charge. For example, who was Qutbuddin Aibak? He was a military commander. He was a confidante of Muhammad Ghori. He got the opportunity. He seized the power. Right. Who was Jalaluddin Khilji? Again, he was a commander he was a governor of, I guess, Punjab or Multan. I'm not sure. पंजाब और मुल्तान का गवर्नर था. जैसे ही उसने देखा कि बलबन के बाद के रूलर्स जो हैं वो कमज़ोर हो गए, he took at opportunity and seized the power. अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद ग़ियासुद्दीन तुगलक को यही चीज़ दिखी. ग़ियासुद्दीन तुगलक again was a governor in Khilji dynasty. He got the opportunity. ग़ियासुद्दीन तुगलक took the power. फिरोज शाह के बाद जब लेटर जो तुगलक रूलर्स थे वो ख़त्म हुए, उसके बाद this person खिज़र खान, he was also a governor. खिज़र खान की मदद, खिज़र खान और उसके बाद सिकंदर शाह नहीं, इसके क्या नाम था, लहजा सिकंदर शाह था, मुबारक शाह, if I'm not wrong. तो खिज़र खान के बाद जो सैयद डायनेस्टी के रूलर्स थे उनके टाइम पे बहलोल लोधी वाज गवर्नर ऑफ लाहौर. पहला राजा के पास आया, कॉन्फिडेंस में लिया, जैसी मौका दिखा पलट दिया. इब्राहिम लोधी के टाइम फिर वही हुआ.
अब क्योंकि वहां इमीडिएट राजा को पलटने की पावर किसी के पास नहीं थी, तो फिर बहलोल लोधी दौलत खान हु वाज गवर्नर ऑफ पंजाब, ही इनवाइटेड बाबर. You take control. We are not strong enough to take to put away the king. This is what it was going on. इसीलिए बाबर ने ये चीज बहुत अच्छे से अपनी कहा जाए कि अपने सक्सेसर्स को बताई भी थी और सिखाई भी थी कि हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. अगेन हुमायूं वाज वीक. The only two rulers who were strong in Mughal era, अकबर एंड औरंगजेब. औरंगजेब इतना स्ट्रांग बन गया कि उसने किसी और को होने ही नहीं दिया. आप उसको अच्छा कहो, बुरा कहो, उसको हीरो समझो, विलन समझो, वो अलग कहानी है. आई एम नॉट इनटू दैट. बट समवन हु हैज रूल्ड फॉर 51 years, इट मैटर्स. रूलिंग फॉर 51 years with an iron fist, it matters. What was the size of Aurangzeb's empire? It was from Madurai to Kabul. One empire. And this is one of the biggest contribution of Mughal Empire in India, that it somehow gave shape for the first time. They combined North and South. समुद्रगुप्त के दौर में भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ऊपर. लेकिन जितना एक्सटेंट औरंगजेब के दौर में आया उतना कहीं नहीं था. अकबर के दौर में भी नहीं था. अकबर के दौर में भी वही नॉर्थ नर्मदा तक की कहानी थी. फिर क्या हुआ? फिर आप लेटर मुगल जब हम देखेंगे तो वहाँ देखोगे देयर विल बी होल स्टोरी ऑफ the royals and the darbaris. They will taking care of everything. So what you have to do with this is, as soon as we will proceed with this part of Delhi Sultanate, आपने कुछ नहीं करना है. आपने सिर्फ जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, उसके नीचे मेन पॉइंट्स लिख दिए, उसके 2 3 4. इससे ज़्यादा किसी के नहीं है. थोड़ा सा आपको बलबन में एक्सपेंशन लगेगा, अलाउद्दीन खिलजी में लगेगा और इल्तुतमिश में लगेगा, और थोड़ा सा और इधर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक. हाँ, मेजर जो अभी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा. सो 2 2 3 3 4 points 5 points ऑफ एवरीवन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. दैट इज इट. इतना एक बना लेना, एक पेज में ये बना लेना. ठीक है. My mind is on Brazil. इतने सारे male emperors. So only female. How did that happen? We'll talk about that. That is a story to tell. And her fate was more unfortunate. So like there were इनके बीच में रूलर्स हुए, इनके बाद भी रूलर्स हुए. There were, but I'm just talking about जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट. एक काम तो ये कर लेना. एक मैंने आपको बैटल का चार्ट्स बताया था. बैटल्स का चार्ट बनाना बताया था. मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं बताया. बैटल का चार्ट नहीं बताया. ये क्या बना हुआ? अरे दिस गर्ल्स विल टेल. हाँ भाई, शिवांगी, आयुषी, have I told you how to make a chart for the battles, all the battles? ऐसा हो नहीं सकता वैसे. In the beginning, इससे और पहले जाओ, और पहले जाओ. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, सेकेंड व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ सिमिलर फ्लो चार्ट फॉर Mughal Empire, starting with Babur 1526 to 30, succeeded by Humayun 1530 to 40, and then 1555 to 56. Then you will talk about Humayun with Akbar 1556 to 1605.
Then Akbar was succeeded by Jahangir, 1605 to 28 or 27. शाहजहां को भूल गए. शाहजहां 1528 to 56. ऑल्दो 54 में ही एब्डिकेट कर दिया था, लेकिन ठीक है. औरंगजेब 1556 to 1707. ठीक है. करना क्या है? बाबर 4 बैटल लड़ी, कौन कौन सी लिख लेना क्या हुआ. सो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इनके नीचे भी नोट डाउन कर लेना. उससे क्या होगा सर, 2 अगर आपने ऐसे डिटेलिंग बना ली चार्ट्स की, तो एक चार्ट में आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत. एक चार्ट में क्या हो जाएगा, मैंने बोला था मेडिवल हिस्ट्री 2 पेज में खत्म हो जाएगी. ये बना लो, फिर मैं बताता हूँ बैटल का चार्ट कैसे बनाना है. दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. आई विल टीच यू ऑफ कोर्स, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर दिस चार्ट फॉर यू. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू दिस. डन. गैप है बीच में 15 साल का, भटक रहा था. दैट वॉज द पीरियड ऑफ सू डायनेस्टी. शेरशाह सूरी का दौर था वो. जो हुमायूं का गैप है ना, हुमायूं में गैप है ना, द 15 years का, दैट 15 years was the rule of Su dynasty. Mughals were paused for a moment. I think today is one of a very historic moment in our country. Huh? Yes, it's not about someone passed away. But I believe that this is one of the rarest moments in our history that a person who was non-political is mourned by all the people of the country without any kind of, discrimination or caste or religion, nothing. You don't have a family, let's say, never married. लेकिन आज आप देखिए कि मैंने एक चीज़ देखी कि अक्रॉस ऑल, मतलब इवन मुझे जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी कि ये जनरल नॉलेज और इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे, दे ऑल्सो फील बैड. रतन टाटा पास्ड अवे. So this is something very unique moment in our history. When the history of this period will be written, this day will be recorded for a day when a person who is non-political, ना प्रेसिडेंट थे, ना प्राइम मिनिस्टर थे, ना कोई पॉलिटिशियन थे, और अगर एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहें तो कैपिटलिस्ट थे.
But these are moments which act. This is the idea of India. This is the soul of India. Everyone felt bad. Well, I didn't. Okay, going. No one is immortal, and I believe that he lived a life which is celebrated, which should be more celebrated. Less, his life should be more celebrated than the mourning of his death. Yes, everyone felt bad. लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी जो शायद इंस्पिरेशन है हम सब के लिए कि इंडिया क्या होना चाहिए, इंडिया क्या है. और आप देखो, कोई ऐसा मुझे नहीं दिखा जिसको एक चीज़ पता चली हो एंड उन्होंने कहा कि नहीं, इट वाज. ये तो कई बार होता है, पॉलिटिशियंस की डेथ होती है तो एक सेक्शन होता है जो कहता है कि यार ठीक है, लीव इट. दैट टू अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन गेनिंग दिस मच लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट, इट्स अ वेरी यूनिक. आप डॉक्टर कलाम को कह सकते हो, लेकिन डॉक्टर कलाम वॉज अ पॉलिटिशियन बिकॉज ही वॉज अ प्रेसिडेंट. His popularity became after he became the president. Fine. There are very few people who have, and neither he was from cinema or theater. होता है वहाँ एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो थोड़ी सी कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन उसमें भी you will find haters. But I don't think so. Anyone in this country today is someone who will say, "No, I don't like that person." No. आखिरकार टाटा का नमक खाया है भाई. This is vision. This is क्या हो? अच्छा. Yes. Huge impact. अब देख लिया मैंने. So this is yes, and we should learn कि जमशेद जी टाटा ने आज से सालों पहले, सदियों पहले बल्कि, जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, एंड हाउ यू ब्रिंग थिंग्स इनटू प्रैक्टिस. इट इज़ नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट अर्निंग मनी. टुडे टाटा ओन व्हाट नॉट, फ्रॉम एयरलाइंस टू कॉफ़ी हाउसेस टू बच्चों के ब्रांड से, मतलब सब है. बट देन ऑल्सो लाइक द आइडिया ऑफ एम्पावरिंग इंडिया, दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि नहीं, आज का दिन एक ऐसा, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि आज की हिस्ट्री कैसे लिखी जाएगी 20-30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद. आज की हिस्ट्री कैसे लिखी जाएगी, दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन. तो जब आज की लिखी जाएगी ना, तब होगा ये कि हाँ, दिस इज़ वेयर इंडिया वॉज यूनाइटेड विदाउट एनी पॉलिटिकल कॉज, एंड इट वॉज नॉट अ क्रिकेट मैच. हाँ, नहीं, मतलब मैं मानता हूँ क्रिकेटर्स की भी फैन फॉलोइंग है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियंस की है और थिएटर्स, सिनेमा की है. लेकिन आपको तीनों केसेस में हेटर्स मिलेंगे. कोई ये नहीं कहेगा कि समवन डाइड तो अच्छा हुआ, नहीं, नेवर. मतलब कहने वाले तो ये भी कहते ही हैं. गांधी को तो लोगों ने छोड़ा नहीं. मुझे तो ऐसे लोग मिले जो भगत सिंह को भी क्रिटिसाइज कर रहे होते थे. ठीक है, चॉइस है, कर लो. यस, ठीक है. तीसरा जो चार्ट बनाना है आपको, दैट इज फॉर बैटल्स. यार बताया होगा यार, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है कि मैंने ऐसा ना किया. बताया होता तो एटलीस्ट कहीं तो लिख देते कि इसका चार्ट बनाना है. नहीं सर ने कहा था कि लास्ट में. ठीक है, कोई बात नहीं. So you have to make columns. You have to make columns. सबसे पहले बात करेंगे battle, not battles, but battle. So battle मान लो कौन सी हमने पढ़ी, तराई 1. Then year 1191. किस किस के बीच हुई? Let's say party A, कुछ भी लिख दो, पार्टी बी. सर कुछ बैटल्स में ज्यादा पार्टी है, उसका क्या करें? किस बैटल में ज्यादा पार्टी है? मतलब 3 से ज्यादा पार्टी कहाँ है? कौन सी ऐसी बैटल है 3 लोग लड़ गए? ऐसा कुछ है नहीं. मैं जानना चाह रहा हूँ. वो नहीं, अगर है तो बताओ. मतलब आई हैव नेवर कम अक्रॉस समथिंग विद 3 people हैव फॉट. जैसे हाँ, तो एक पार्टी में
tripartite struggle. तो बैटल तो एक ही हुई ना, एट अ टाइम दो ही लड़ रहे थे उस पे। मतलब कंफ्यूजन नहीं होता तीनों एक साथ बैटल फील्ड में आते कि पहले किसको मारे, मतलब नहीं वैसा नहीं, बैटल की बात हो रही है। स्ट्रगल वाज अ लॉन्ग, इट डिपिक्ट्स अ वेरी लॉन्ग। सो यहाँ किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। कौन जीता? सर जो जीता उसको सर्कल हाईलाइट वो कर लो। अच्छा, इम्पैक्ट, और यहां पे लिख लेना ट्रीटी। अच्छा, ट्रीटी आपको इस मिडिवल फेज में नहीं मिलेगी, मॉडर्न में मिलेगी। बैटल के बाद ट्रीटी, एवरी बैटल फॉलोड बाय ट्रीटी, ये कंसेप्ट आपको मॉडर्न इंडियन बैटल्स में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, जैसे तराई 1 हो गई, तराई 2 1192, अगेन पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। जीता कौन? ये। इम्पैक्ट, स्टार्ट ऑफ टर्किश रूल। ठीक है, जैसे पानीपत 1 1526, बाबर, इब्राहिम लोदी। या तुम इधर विनर लूजर ऐसा भी लिख लेना, जैसा चाहो वैसा लिख लो। जीता कौन? बाबर। स्टार्ट ऑफ मुगल रूल। ठीक है, तो ऐसे आपने सारी बैटल्स को, जितनी बैटल्स हम लिखते जा रहे हैं उनको एक जगह क्लब कर लेना है। सारी बैटल्स को क्या करना है? एक जगह क्लब कर लेना है और ये डिटेल बना लेना है, काम हो जाएगा इतने में। मॉडर्न इंडिया में एवरी बैटल इज फॉलोड बाय ट्रीटी, देखा था ना हमने। बक्सर, 2 एक्सेप्शन है, थर्ड बैटल, 4th एंग्लो मैसूर वॉर और बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, नॉट बक्सर। बक्सर क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। सर कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ बैटल्स है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रीटीज है। किसमें? यू आर टॉकिंग अबाउट द एंग्लो मराठा वॉर, बट यू हैव टू कंसीडर द फाइनल ट्रीटी। सेटलमेंट जहां पे होगा उसको गिनेंगे ना। फाइन, इस तरीके से आपको ये सारा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपने उसको बना लेना। इब्राहिम लोदी। ठीक है, ओके। सो यू हैव टू मेक एक एक, इसके बाद ये तीनों गए, एक लिस्ट ऑफ बुक्स बना लेना, बुक्स की लिस्ट बना लेना बस, जो मिडिवल इंडिया में है, और बुक कौन था, ऑथर कौन था, इस टाइप से, कौन सी बुक का ऑथर कौन सा था। तीसरा और एक बना लेना आपने आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपका इसी वाले पार्ट में आ जाएगा, आर्किटेक्चर की अलग से करने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये बना रहे हो तो आर्किटेक्चर को अलग से हाईलाइट कर देना कि किसके टाइम पे कौन से मॉन्यूमेंट बने। बस हो गया, इससे ज़्यादा मिडिवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। Okay. So now let us talk about important rulers of slave dynasty. Important rulers of slave dynasty. सबसे पहले बात करते हैं the founder himself, and that was कुतुबुद्दीन ऐबक।
Qutbuddin Aibak, 1206 to 1210. अच्छा, so first of all he consolidated the northern India, including Delhi, Ajmer and parts of Punjab. तो इस रीजन जो इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन था, it was the region of Delhi, Ajmer and Punjab, parts of Punjab. Fine. Okay. 1206 he declared himself as Sultan of Delhi. 1206 he declared himself as Sultan of Delhi. और इसका जो पीरियड है यहाँ पर, क्योंकि एज सच मेजर कोई कंस्ट्रक्शन वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो रिफॉर्म्स नहीं थे, लेकिन यहाँ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है. 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कुतुब मीनार, कुतुब इस्लाम मॉस्क, अब बताओ क्या है सर? कुवत, QUWWAT, कुवत. ये कहाँ से? दिल्ली। नेक्स्ट टू कुतुब मीनार, ये दोनों दिल्ली में. अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखना, सवाल अगर आया तो 2.5 दिन का झोपड़ा. द थर्ड इज 2.5 दिन का झोपड़ा. 2.5 एज इन 2.5. इट्स अ मॉस्क सेट टू बी मेड इन 2.5 days. सुना है? There's some speculation going here. इंटरनेट में गलत दिखा. Is there something like इसका जो hey, it's already there, but it's the wrong one. No. Oh, you are confusing it with Masjid Al-Aqsa. That is different. Oh, that's in Palestine. So there is a concept, the Masjid Al-Aqsa, which is the third most important place in Islamic history. Al-Aqsa Masjid. So generally when you search internet, you will see a golden dome, which depicts Al-Aqsa. It is not. Behind that golden dome, there is a black dome mosque. That is real Al-Aqsa. And it is said, and it is not said, that the Temple of Solomon, so when the Christians, so it was Christians, it was the first temple of the Jews. That was the first temple of Jews. 19th AD, 19 AD or 90 AD. So it was in 1st century AD that Christian took it over from Jews. Okay. Then somehow they managed to build the second temple somewhere around 1000 AD. Fine. But that was also very short-lived. That the second temple was again destroyed. Now this time by Christians again. Christian destroyed the second temple of the Jews. But what happened? That the ruler of Arab, Sultan Salahuddin, when he captured Jerusalem, 13th century. Yes, King Reginald. So when he took it from the Christians. Achha, when Christians were handing over Jerusalem to Muslims, they had one agreement that Jews can come here for their pilgrimage, but the Jews will never be allowed to settle in Jerusalem. This was an agreement between Christians and Muslims when Christians lost Jerusalem and they handed it over to Muslims. And this was kept till Ottoman Empire. They said that हमारे बीच चलेगा, इनको allow नहीं करना. Because that is a place, the city of Jerusalem, it is prized for Jews, Muslims and Christians, all of us.
said to came from the same lineage of religions. तो अब वो वहाँ पे ये कहा इसीलिए, अच्छा अभी if you remember when Biden became president, he declared Jerusalem as the capital of Israel. He also shifted the consulate in this. So what you're saying, na, that so ab why Jews? Now Jews want to build the third temple to fulfill the prophecies which were done thousands of years back. Jews are more religious. They are more, I'll say, radical and to follow their religion. And today you will see every third company in this world is owned by Jews. So I was just watching one old document. It was a documentary which was talking about the 18th and the 19th century. Achha, usme there's a scene. There was this Theodor Herzl who gave the idea of Zionism, who actually propagated the idea of Zionism in the modern world. अच्छा उसके ही जो ग्रुप के लोग थे तो they said that we have a vision, and this I'm talking in 1700s. We have a vision. See, what for what? He said that I have a dream that whole day the whole world will eat the same food. How we want to create, change the habits of the people कि वो पूरी दुनिया एक जैसा खाना खाए. बोली how is it possible कि पूरी दुनिया एक जैसा खाना खाए? नहीं, we will start a chain of restaurants, food joints जहाँ सब एक जैसा खाना खाएंगे. आप इटालियन भी वही खाएगा, अमेरिकन भी वही खाएगा, और अरबी भी वही खाएगा, और ज्यू भी वही खाएगा, और क्रिश्चियन भी वही खाएगा. बोले नहीं हो सकता. मतलब उस टाइम ये एक रैडिकल आइडिया था और लोग उसे बेवकूफ़ी भरा आइडिया कहते थे. एंड ही सेड आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एंड दिस विल नॉट हैपन इन अ डे or in decade. This will take centuries. And see today what is happening. The whole world is eating the same food. Pizza, burgers, French fries, same Mac burger available everywhere. And these all companies have their ownership with Jews. So to fulfill the prophecies, they have to make the third temple. But third temple is with it's अच्छा interesting चीज. The Al-Aqsa compound, जहाँ अच्छा उसके पीछे उनकी the western wall है. So you'll see जब भी आप Jews का कोई वीडियो देखोगे या कुछ ऐसा देखोगे तो they are leaning towards a wall and they are praying. So there's just one wall of that second temple left from past 1000 years. वो वहाँ उसको though that falls in Jerusalem, Al-Aqsa, but the control and the protection of Al-Aqsa is with the hands of Jordan to avoid the conflict. इसीलिए कंपाउंड के आसपास अटैक होता है. जब भी आप खबर सुनोगे कंपाउंड के अंदर अटैक नहीं होता, बिकॉज द सिक्योरिटी ऑफ दैट होल जोन इज विद जॉर्डन. जॉर्डन के पास है. जॉर्डन इसीलिए फ्रेंडली रिलेशन रखता है with Israel. बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है वो. मिडिल ईस्ट की जो हिस्ट्री मतलब इट इन्वॉल्व्स एवरीवन. इट इन्वॉल्व्स यू, मतलब ज्यूज को भी इन्वॉल्व है. एंड I think people get confused. मतलब वो आधा से शुरू करता है सिर्फ वो हिस्ट्री खो जाता है. इसलिए खो जाता है. You have to start from 1st century AD. When the destruction of first temple, there was no Israel before 1948. Because when this happened, when the Treaty for Jerusalem happened, मतलब वहाँ पे ये बिल्कुल clarified था कि Jews will never settle here. And in the after the First World War, it's called as the Balfour Declaration. From nowhere it came. Still remember one story of a French general, and this French, I'm forgetting his name. क्या नाम था उसका? This French.
Yes. So after the Second World War, so grave of what you call as in English, he's called as Saladin, and in Arabic, Sultan Salahuddin Ayyubi. So he was a warrior, and he was from the Ayyubid dynasty, or 12th century mein he took over the control of this region. His grave is in Syria, Damascus. So there's a, yes, if I'm not wrong, the first. So there were like crusades की हमने world history में बात की थी. Talked about crusades played a role in before the Renaissance. So there was a second phase of crusades. The first phase of crusades happened somewhere around 1000 AD. Fine. So the first crusade, then the second crusade, 1187. Yes, 1187 he captured Jerusalem, or the Christian population there was given two options. You want to leave, you leave. You want to live here, you live here with all protection that will be given to you. So ये तब हुआ, कब हुआ ये 1187 में. Yes. French, and then there was a treaty following this, that yes, Treaty of Ramla 1192. इसी पीरियड, मतलब इस दौर में वहाँ कुछ और हो रहा था. 1192 Treaty of Ramla. अच्छा, then there was this treaty, और यहाँ पर उन्होंने कहा था Jews were not allowed. Fine. So Second World War के बाद एक French Jewish general था. Because after that Ottoman Empire was, after First World War, Ottoman Empire was all divided between the French and the British. So that French general went to Syria and he went to Damascus. And then he reached the grave of Sultan Salahuddin, and he, knocked it with his feet and said, "Wake up, Salahuddin, we are back." And this is written in that French general's diary. And you see how deep-rooted it is. The event, the treaty that we are talking is of 1192. And now what I'm telling you is 1919. 800 years, roughly. अभी जाके कहता है, we are back. और वहाँ से आता है Balfour Declaration, which allows the Jewish to settle. Ottomans never allowed. He said, एक बार जो तय हो गया, नहीं करेंगे, नहीं है ये हमारा, मतलब Ottomans, because the caliphate was with Ottomans. जो caliphate की हम बात कर रहे थे, in the later period, it was with the Ottomans always. तो उन्होंने कहा नहीं, we have given a word to the Christians. We will never allow them, never allow them. Then you see Israel not listening to anyone. Huh? Although एक और कहानी हमने नेपोलियन को पढ़ा था. There's a legend in history where Napoleon also visited grave of Salahuddin. And he said, मतलब नेपोलियन के उसमें लिखा हुआ है that if we both were alive at the same time, the world was very small for us. Both were conquerors, both were military generals. So he had that high regard for them. कोई नहीं. So वो जो आप बात कर रहे थे, यहाँ से जो बात निकली, दूर तक चली गई, वो यही थी कि what you confuse Masjid al-Aqsa with Quwwat al-Islam. So you can go and visit this Quwwat al-Islam mosque in holidays. It's in the Qutub complex. Okay. अच्छा, what happened that ये दो चीज़ें. 1210 he died. Qutbuddin Aibak was also known as Lakh Baksh. Qutbuddin Aibak is also known as the Lakh Baksh, that is, the giver of millions. Generous, he was doing so much charity. Also, one more thing, that Qutub Minar. So, who started the construction of Qutub Minar? Qutbuddin Aibak.
Qutbuddin Aibak never finished that because he died before the completion. Okay, and the word Qutb in Qutb Minar does not depict or does not relate to Qutbuddin Aibak. It is not for him. Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. Matlab, he was a Sufi saint and Qutbuddin Aibak was his disciple. तो जो कुतुब मीनार में कुतुब है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है. ठीक है. It was completed during the reign of Iltutmish and repairing was done by Firoz Tughlaq. फिरोज तुगलक के दौर में दिल्ली में एक बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक आया था जिससे कुतुब मीनार में क्रैक्स आ गए थे. अ पार्ट ऑफ इट वाज डिस्ट्रॉयड. तो अगर कभी कुतुब मीनार देखोगे तो आपको अलग से दिखेगा, टॉप का हिस्सा अलग बना हुआ है. सो व्हेन ऑब्जर्व इट क्लोजली, वो टॉप का एक नोड अलग ही बना होता है, वो फिरोज तुगलक ने बनवाया. बाकी नीचे का इन्होंने बनवाया. ठीक है. अच्छा, 1210 he died. Who? Qutbuddin Aibak. He died 1210 or he was succeeded by his son Aram Shah. He was succeeded by his son Aram Shah. Aram Shah ज़्यादा लंबा चल नहीं पाए और नोबिलिटी ने क्या किया सॉरी, आराम शाह ज़्यादा लंबा चल नहीं पाए और नोबिलिटी ने हिसाब किताब करके आराम शाह को हटाया एंड दे कॉल्ड हिज सन इन लॉ. इल्तुतमिश. उन्होंने क्या किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 to 36. शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 to 36. सो आराम शाह जो है वो okay. So as usual he was a king, तो उसने expansion तो किया, but important चीज़ें अगर हम ध्यान रखें, he was the one who introduced, so वो जो हमने इक्ता सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे सिंध और मुल्तान वाला, it was Iltutmish who started इक्ता सिस्टम in Delhi Sultanate. Fine. So उस समय implementation was not very smooth. तो 4 साल ही तो रूल रहा ना उसका. कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल ही कितना रहा? 4 साल. Where he was more inclined towards expansion of the empire rather than doing these things. तो अब यहाँ पर अच्छा, if you say 3 major or 3 great rulers of Delhi Sultanate, Iltutmish, Balban, Alauddin Khilji, ये टॉप के like he rank मतलब by their importance and by their contribution. If you will see the 3 important rulers of Delhi Sultanate, Iltutmish, he laid the foundation. Balban expanded, he strengthened the foundation. Fine. और फिर कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी. तो बहुत ही कांड किए थे. Fine. Okay. So अच्छा, okay. Okay. फाइन. सो इस टाइम पर दिल्ली, लाहौर, अच्छा तब तक क्या हुआ थोड़ा सा, देयर वर वेरियस अदर कंटेंडर्स ऑफ थ्रोन एज वेल, बट समहाउ इसने इल्तुतमिश ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल इक्ता सिस्टम को उसने इस्टेब्लिश किया. दूसरी चीज़ जो उसने की, दैट ही what is that called?
फिर बोलोगे सर क्या लिखा है? तुर्कान चहलकानी. So what was this? This was a group of nobles. Turkane Chahalgani was a group of 40 Turkish nobles. Fine. Okay. So this was especially made to advise king when he was facing Mongol invasion. तो ये एक तरीके से एक permanent advisory body के तौर पे निकल के आया जो आगे तक चलेगा. Balban will end this. Fine. अच्छा. What he did, he annexed Bihar, Bengal. इसने कहाँ तक expansion किया? He annexed Bihar, Bengal. In 1230 he annexed Bihar and Bengal. Yes. 1231 Kannauj and Banaras. Malwa and Ujjain 1229, sorry. Kannauj and Banaras 1231, Malwa and Ujjain 1229, ठीक है. Then important contribution in architecture, he finished the construction of Qutub Minar. He finished the construction of Qutub Minar. Fine. He also built Hauz-e-Shamsi. So, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और उसे कंप्लीट किसे कराया? किसने कराया? इल्तुतमिश ने. फाइन. Hauz-e-Shamsi, Hauz is in Turkish. Hauz is for reservoir. So Hauz Khas, it is a reservoir, water reservoir, na? That is why. तो कुतुब मीनार के सदर्न एंड पे है Hauz-e-Shamsi. फाइन. ठीक है. हाँ प्लीज. अच्छा, he died in 1236. He died in 1236. और यहाँ पर क्या हुआ? 1236 में जब इसकी डेथ हुई तो he was succeeded by his son Ruknuddin Firoz. He was succeeded by his son Ruknuddin Firoz. लेकिन Ruknuddin Firoz himself was a weak ruler and he got assassinated within 6 months. और फिर तुर्कान चहलगानी ने यह तय किया कि बड़े बेटे को नहीं, the most able son of Iltutmish, this was the title given. Razia Sultan. So she was daughter of Iltutmish. First and the only Muslim woman ruler, including both Sultanate and the Mughal period. Ruknuddin Firoz.
रुकनुद्दीन फिरोज। अच्छा, इनके साथ कहाँ अच्छी थी, शी वॉज नो डाउट, अगर कोई 1236 में समवन इज रीचिंग दैट लेवल मस्ट, और एंड दिस वॉज डन बाय नोबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी नोबिलिटी को दिक्कत थी कि एक औरत के सामने झुक के सलाम कैसे कर लें, एक प्रॉब्लम ये थी। फाइन, द ओनली फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली, एंड इट वॉज ऑलवेज मतलब इल्तुतमिश भी यही चाहता था दैट आई शुड बी सक्सीडेड बाय रजिया सुल्तान। अच्छा, रजिया के साथ क्या हुआ? रजिया, अच्छा, मुस्लिम्स में यहाँ अब जो टर्किश मुस्लिम्स थे उनमें दो चीज़ें हुई। एक तो शी लेफ्ट ऑल द ट्रेडिशनल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज मतलब शी लेफ्ट पर्दा, शी स्टार्टेड लीडिंग द मिलिट्री एक्सपीडिशंस, शिकार पे जाना एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड शी वॉज एन एबल एंड जस्ट रूलर। मतलब उसने एक जहाँ कहीं भी जस्टिस और एबिलिटी की बात आएगी तो आप कहेंगे कि यस शी वॉज फाइन। और इसी प्रोसेस में उसने क्या किया, उसने शी अपॉइंटेड जमालुद्दीन याकूत एज आमिर आखूर। शी अपॉइंटेड याकूत एज Akhur means Amir Akhur is the position. He is in charge of the royal horses. Royal horses. So there's like horses for common soldier, but these were the royal horses, so the Rolls Royces wali car ka maintenance wala. But and this position historically has been only with the fair skin or the white skin Muslims. Jamaluddin Yaqut was an Ethiopian. Yes, he was an Abyssinian. तो ये एक तो बहुत से जो टर्किश नोबल्स थे उनको ये टॉलरेट नहीं हो रहा था कि हमें एक औरत के आगे सलाम करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, बिकॉज दैट वाज द थिंग दैट टू बी डन। दूसरा ये हो गया, तो वो एक ये एल्बर्ट बिल है इस दौर का, ये इस दौर का एल्बर्ट बिल है। तो शी अपॉइंटेड, एंड दिस पोजीशन हैज ऑलवेज बीन लाइक इन चार्ज ऑफ रॉयल हॉर्सेज इज वाज अ बिग थिंग, एंड इट इज सेड दैट रजिया वाज इन लव विद दिस पर्सन। सो ये कभी आप वो देखोगे, पुरानी मूवी है रजिया की सुल्तान के नाम से ही, हेमा मालिनी इज इन दैट, ऐ दिले नादा, हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग? आरजू क्या है, जस्तजू क्या है, सर्च मूवी रजिया सुल्तान, मिल जाएगा। मूवी नाम है रजिया सुल्तान। हाँ, मूवी का नाम ही रजिया सुल्तान। तो शी वॉज इन लव विथ दिस जमालुद्दीन याकूत, शी वॉज इन लव। अच्छा, ये भी बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो दे प्लान्ड अ कॉन्स्पिरेसी। ना वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई। मलिक अल्तूनिया वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब, भटिंडा। मलिक अल्तूनिया वॉज द गवर्नर ऑफ भटिंडा। उससे कहा गया कि तुम जो है वो रिवोल्ट करो, यहीं से दिल्ली की तरफ से ही मैसेज गया। जैसे ही वो मान जाता है, ही वॉज द पार्ट ऑफ दिस प्लॉट इनिशियली, वो मान जाता है दैट यस, तो वो वहाँ क्या करता है, बगावत की खबर करता है, और यहाँ तक खबर ये पहुँचती है दैट ही इज मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली, और रजिया को जो है हटाने के लिए वो आ रहा है। अच्छा, रजिया को इस तरीके से बताया गया कि मतलब शी वॉज बीइंग प्रिटेंडेड कि वो मूव करे, इससे पहले आप मूव करिए। तो रजिया क्या करती है, रजिया अपनी फौज है वो लेके, फोर्स लेके वो दिल्ली से भटिंडा की तरफ जाती है, ठीक है। और उसके साथ ऑफ कोर्स जमालुद्दीन याकूत वाज देयर। एंड दिस वाज इन 1240 ओनली। जमालुद्दीन याकूत के साथ वो जाती है। रास्ते में मलिक अल्तूनिया और उसके भाई मुइजुद्दीन बैरम शाह, इसके आदमी मिलके इनके ऊपर अटैक करते हैं, याकूत का कत्ल कर देते हैं और रजिया को अरेस्ट करके भटिंडा पंजाब जो है वो ले जाते हैं। रजिया को अरेस्ट करके कहाँ ले जाते हैं, पंजाब। याकूत को मार दिया। इश्क ने निकम्मा कर दिया, मकाम के थे, ठीक है। और इधर दिल्ली में मुइजुद्दीन बैरम शाह, जो कि रजिया का भाई था, हाफ ब्रदर, उसको क्या किया, दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। रजिया जेल में है, रजिया को खबर लगती है कि उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो
she had a plan. From jail, she sent a marriage proposal to Malik Al-Tunia, governor. She sent a marriage proposal to Malik Al-Tunia. मलिक अल्तुनिया थोड़ी देर तो सोचता है और वो हाँ कर देता है. मैन बीइंग मैन. और मलिक अल्तुनिया और रजिया की शादी हो जाती है. और अब रजिया को जो है वो मलिक अल्तुनिया की, उसका प्लान मलिक अल्तुनिया से शादी वादी का कुछ नहीं था, उसे दिल्ली वापस चाहिए था. एंड शी न्यू मैन विल बी मैन. अच्छा, ये लोग जाते हैं इनके ऊपर, और जैसे ये रास्ते में होते हैं इनके ऊपर अटैक होता है. एंड बोथ मलिक अल्तुनिया एंड रजिया वर किल्ड. तो दिस अप्लाइज टू मलिक अल्तुनिया की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते. तो दिस अप्लाइज हियर कि इश्क ना करते तो हुकूमत करते. तुम में से कोई ये शेर ना कहे तो ज़्यादा अच्छा है. 10 साल बाद पता चला कोई तुम में से बोले सर ने एक बढ़िया शेर सुनाया था. क्या आज समझ में आया कि हम अगर इश्क ना करते तो आईएएस बन गए होते. ठीक है. तो this, so Razia Sultan 1236 to 1240, the first and the only female ruler. Fine. So this is, मतलब this was Razia Sultan. Razia Sultan के बाद जो next ruler आया, it was next notable ruler was Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287. उसके बाद 20-25 साल जो है ऑन ऑफ रूल चलता रहा. मेजरली जो रूल था वो था नसीरुद्दीन महमूद का. नसीरुद्दीन महमूद वॉज ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश. सर रजिया के बाद इट वॉज ग्रैंडसन, मेजरली इट वॉज ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश नसीरुद्दीन महमूद, और उसी का गवर्नर था, उसी का वजीर था बलबन. बलबन वॉज अ पार्ट ऑफ तुर्काना चहलगानी. बलबन वॉज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 40. ठीक है. और ग्रेजुअली जो है वो बलबन धीरे 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 करके क्या बन जाता है, बलबन जो है वो यस फाइन. सो नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अच्छा, रजिया के दौर में भी बलबन था. ही वॉज आमिर शिकार. सो आमिर शिकार मीन्स द लॉर्ड ऑफ द हंटिंग. सो इन चार्ज शिकार, हंटिंग. ओके. So he was a part of this, but he was mainly a kingmaker. रजिया के दौर में भी था. Then he was, हाँ, नसीरुद्दीन महमूद के दौर में नसीरुद्दीन महमूद के दौर में he was given the title of Naib-e-Mamlikat, Deputy Sultan. He was given the title of Naib-e-Mamlikat, that is Deputy Sultan. और फिर ये दिमाग लगाता है और क्या करता है, नसीरुद्दीन महमूद की बेटी से शादी कर लेता है. He was raised to that position and then बड़े घर की बेटी से शादी कर लेता है. और 1266 में he became the king. तो 1266 में नसीरुद्दीन महमूद died and he took the title of Ghiyasuddin Balban. He took the title of Ghiyasuddin Balban. Fine. और he is considered to be the most, वो जो blood and iron वाली पॉलिसी है ना, the most strict ruler of that time was बलबन. मतलब फॉर कोर्टियर्स, आम आदमी को तो एक बार बख्श भी देता था, लेकिन फॉर कोर्टियर्स स्लाइटेस्ट ऑफेंसेस वाज हैविंग स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट. दरबारियों, और उसने क्या किया, ही एंडेड दिस तुर्काना चहलगानी. ही वाज स्मार्ट. ही एंडेड दिस तुर्काना चहलगानी. व्हाई आई एम सेइंग ही वाज स्मार्ट? क्योंकि वो कहां से उठ के राजा बना था,
He was a part of that nobility and he became the king. He said someone will rise again. End that. Fine. So आप कह सकते हो कि 3 बड़े रूलर इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन of Delhi Sultanate as a whole. Fine. He started the Persian festival of Navroz in India. He started this festival, Persian festival of Navroz in India. He started two practices of sajda and pabos. Sajda and pabos. Sajda, prostrating in front of the king, झुक के बिल्कुल, इसका ना दंडवत होके, and pabos means kissing the feet. So, pa is used for feet, and bosa in Persian it is kiss. So, kissing the feet, pabos. राजा को उसने larger of life, larger than life वाला जो है ना, he is the one जिसने जो है ना वो जिले लाही वाला कंसेप्ट देने वाला यही था. Fine. Okay. So he ended this Turkana Chahalgani. He started this thing. Okay. Yes. Then, yes, he believed in Zil-e-Ilahi. Zil-e-Ilahi means the shadow of God, reflection of God. So he believed in this divine theory of kingship. He believed in this divine theory of kingship, where he assumed the title of Zil-e-Ilahi. And this was the time we saw emergence of Amir Khusro. Means Urdu was, Amir Khusro का सबसे बड़ा contribution ये है that he gave grammar to Urdu. Yes. अभी उर्दू ज़बान नहीं है, अभी टर्किश और पर्शियन चल रहा है, लेकिन वो जो उर्दू एज वी सी इट, उसकी शुरुआत अब यहाँ से होना शुरू होगी. एक ऐसी ज़बान जो कि ना पूरी तरीके से टर्किश थी, ना पूरी तरीके से पर्शियन थी, ना पूरी तरीके से हिंदी थी, ना पूरी अरबिक थी, सब का ब्लेंड है. सो प्योरली इंडियन लैंग्वेज. इट इज़ अ प्योरली इंडियन लैंग्वेज, उर्दू. It was not started. Urdu started to develop in his time because he was a supporter of scholarly literature and scholar. Or Amir Khusro. So Amir Khusro will see a lot of sultans on. He has seen like 7 sultans on the throne of 7 or 8 sultans on the throne of Delhi. Amir Khusro. So he lived for a very long period. That's why he is also a very important source of this period. खैर, बलबन की डेथ होती है. बलबन की डेथ होती है एंड he was succeeded first by his grandson and 1290 में उसकी भी डेथ हो जाती है and then he was succeeded by Kayumar. So Kaikubad was grandson of Balban who succeeded him. Kaikubad was grandson of Balban who succeeded him in 1287. और 1290 में Kaikubad को हार्ट अटैक आया and then he had only a 3-year-old son left. So by default that 3-year-old son became the king. और इसका फ़ायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने, और जलालुद्दीन खिलजी ने कयूमार का कत्ल किया
and he laid the foundation of Khilji dynasty. Yeah. And later he was known as Clemency Jalaluddin for his कह सकते हो कि so Jalaluddin Khilji overthrew the last ruler and laid the foundation of Khilji dynasty. This will do on Monday. Fine. Thank you so much. And class here.